Problem number 2.18. The principle of parallax in section 2.31 is used in determination of distances of very distant stars. The baseline AB is the line joining Earth's two locations 6 months apart in its orbit around the Sun. The baseline is about to the diameter of Earth's orbit, approximately 3 into 10 raised to power 11 मीटर. फर्स्ट हम यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट समझते हैं वो हमें क्या कहना चाह रहा है. अर्थ रोटेट अराउंड सन, सो सन इसके राउंड हमारी अर्थ रोटेट कर रही है. सो दे सेड द बेस लाइन ए बी द लाइन ज्वाइनिंग अर्थ्स टू लोकेशन 6 मंथ अपार्ट इन ऑर्बिट अराउंड सन. हमें मालूम है अर्थ टेक 12 months to complete its orbit around the sun. So in 6 months my earth will travel half the orbit. So you can say that diameter of orbit. So line AB joining the earth two locations 6 months apart in orbit around the sun, that is a baseline. So this is my became baseline is about the diameter of Earth's orbit 3 into 10 raised to power 11 meter. However, even the nearest star are so distant that with such a long baseline they will show parallax angle of order only 1 second. Parallax only of the order of 1 second of arc or so. A parasec is a convenient unit of length on the astronomical scale. It is the distance of an object that will show a parallax of 1 second of arc from opposite ends of baseline equal to the distance from the earth to the sun. So please यहाँ पे हम एक चीज़ दोबारा रीड करेंगे. From the opposite ends of baseline equal to the distance from the earth to the sun. So अब according to question what examiner asks, examiner क्या पूछ रहा है कि the distance from the earth to sun, distance from earth to sun. So this distance, how much is parasec in the terms of meter? If we take, अगर हम ये distance लें as a baseline now, ठीक है, so it became d by 2. So diameter कितना था 3 into 10 raised to 11. So the distance between sun and earth कितना आ गया d by 2. ends of a baseline equal to the, अब उसने क्या कहा गया baseline equal to the, ठीक है, distance from earth and sun लेनी है. how much is parasecs in terms of meter, parasecs in terms of meter. so एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझ लेते हैं. इसमें हमें एग्जामिनर ने काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश की है. so उन्होंने क्या कहा, एक स्टार है जो काफ़ी डिस्टेंट है. अगर मैं इसे ए बी बेस लाइन मान लूँ, the diameter of Earth's orbit, so it make an angle of 1 second. So this is my condition. So next part में उसने क्या कहा गया कि from opposite ends of a baseline equal to the opposite ends of baseline equal to the distance of sun and earth, so means d by 2. how much parasec in terms of meters. so यहाँ से भी उसने कह दिया कि वो स्टार इतना दूर है. अगर मैं let this point be s, so sun let be s. so उसके कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ए एस को भी चूज़ करूँ, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, द स्टार
इज सो डिस्टिंक्ट, इतना दूर है कि उसका एंगल भी 1 सेकेंड ही होगा. सो फाइंड द पैरासेक in meters. So what is parasec? When angle made by 1 second. So now we are going to start it. Now the distance from sun to earth और वाइस वर्सा, और टू सन भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ऑर्बिटल डायामीटर. सो माई ऑर्बिटल डायर विल बी 3 into 10⁻⁻11 meter. So it's half. So it became, so let it be denoted by small b is equal to 1.5 into 10⁻⁻11 meter. So we can say that our AS comes out to be 1.5 into 10⁻11 meter. And we know that by definition this became D, and this is also no D, and this is angle 1 second denoted by theta. हम इसे थीटा से डिनोट करते हैं. सो आल्सो हमें थीटा भी गिवन है 1 सेकेंड. सो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेरा सेकंड है, मिनट है और डिग्री है, दिस इज़ नॉट एसआई यूनिट्स. हमारी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं एंगल के लिए? रेडियन. सो हमें इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हम देख लेते हैं. जब हमने स्टार्टिंग में किया था तो हमने कहा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और इन अदर वेज हम ये भी कह सकते हैं कि डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय बोथ बाय 60. सो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट. एंड अनदर वे हमने क्या कहा था कि माई 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो same, this equation divided by 60 both sides, so it became 1/60 minute is equal to 1 second. So my 1 second in degrees will became 1/60 minute. So minute की वैल्यू इन डिग्रीज 1/60 इंटू 1 degree by 60 is equal to 1 minute. So we are going to substitute this value in our equation. So I am converted into my second into degree. And further हमने पहले ही कह दिया था कि SI यूनिट हमारी एंगल की रेडियन होती है. सो वी आल्सो नो डैट 2 पाई जो रेडियन में इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. So pi comes out to be 180 degree. So 1 degree 1/80. So 1 degree comes out to pi by 180 radian. So further 1/60 into 1/60. So 1 degree comes out to be pi by 180 degree radians. So after calculation it will be theta is equal to 4.85 into 10⁻⁻7 radian. Now by definition we all know that कि D is equal to B by theta. So this is the by definition of parallax method. So by definition, so we know that our comes out to be 1.5 into 10⁻11 meter, and theta in radians come out to be 4.85 into 10⁻⁻7 radian. Hence, so D comes out to be distance
so we also considered d is equal to, let be 1 parasec. So d value of c is substitute 1 parasec is equal to b 1.5 into 10 raised to power 11 meter and theta 4.85 into 10 raised to power minus 7 radian. So my 1 parasecs in forms of meter became 3.35 into 10 raised to power 16 meter. So according to question what we have to find, हमने क्या फाइंड करना था कि हाउ मच मीटर्स, कितने मीटर्स हैं इन 1 parasec. So this is our answer.